Just a normal day at work. Yeah. वन एंड ओनली काफी मुझे पसंद नहीं है टीम प्ले। लिया मैंने हाईवे हम आगे आगे स्ट्रीट से। शहर में जाने माने जब से हुए हैं हम 20 के। लिखता मैं क्योंकि चाहूँ कोई करे मेरा फील पेन। झूठ बोलना सीखा नहीं तभी हम बेटे जीत रहे। किलिंग इंस्ट्रूमेंटल्स बड़ा हुआ करके रीमिक्स। जब हुआ 18 का सता रही है नींद। ये अब सोऊंगा जब उतारूंगा बोझ अपना पीठ से। पूछा डेट के लिए वो कहती मैंने लीग में। बेबी गर्ल के नखरे ज्यादा कपड़े उसके शीन के। रहती वो मीन है जब तक मिले नहीं चीज केक। हम वो है बिच बैड टैटू उसकी जीन्स में। हाँ और ये सीखा 50 सेंट से। मुंह पे बात बोलनी सीखी गाने सुन के एमिनेम के। पंचेस बिग एल से कोल कैंड्रिक के फैन थे। इंस्पायर हुए हो वेन और ड्रेक के पेन से। मेज पे है प्लेट मेरी लौंडे ले रहे बूफे। 8 साल बाद तारीफ है डीएम में करे स्कूलमेट। कई साल आगे तुमसे इफ यू रीडिंग दिस टू लेट। दोग दांतों में लगा रहे लड़के जैसे टूथपेस्ट। मिलके चले बॉयज यहाँ शौक गाड़ियां विद लॉयस का। कुछ कमाने निकले कुछ पहले से इन टोयोटा। रैप कर रहा दिल्ली और गुड़गांव से लेके नोएडा। बीफ की बातें करते हैं जो मीट खाते सोए का। जो फालतू कह रहा कहने दे। सीखा मैंने पहले से अगर तू नहीं भाई तो कैश लिस्ट नहीं देगी मेरी मैनेजमेंट। कमाई चोरी की तो उससे अच्छा भूखे रह लेंगे। सीखा मैंने घर से मेरे तभी चलती मेहनतें। सोच गहरी खाली नहीं ज्यादा टेंशन पाले नहीं। बल्ली मरान जाके प्लेट खाता मैं निहारी की। इन रैपरों का बन चुका पैटर्न है। लिखा नहीं जा रहा तो कंपनसेट करे फैशन से। क्लाउड लेके लड़के हो गए हिट पहले साल में। फेम नहीं संभल रहा तो ये स्टाइल पे उधार के। वीडियोस में नाच रहे लाइफ पे है हाफ रे। स्टार बनना चाहते जिन्हें फंड करा बाप ने। बड़े हुए हम पेशेंट नहीं यार। लिखाई जैसे तब्बू तेरी रेटिंग से बाहर हो गए बड़े आदमी। कोई नहीं भाई बैठ चौकी जनता से नहीं मैच हो रहे स्पॉटिफाई स्टैट्स। किसी का खौफ नहीं था लेवल है गॉडजिला। जो सोचा बोल दिया किंग हूं मैं स्कॉर्पियन। गुस्सा ये ब्रोली का कीमत मेरे सोल की ना तब से कर रहा जब एबीजे काम थे पर सीधे मौत नहीं था। लायक हूं तो मैप पे मैं रैपिंग लाइक एम गॉड टियर लेजेंड हूं तब से जब एक प्रोजेक्ट नहीं था ड्रॉप किया स्मोक। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, कोई आया ही नहीं है। खुद से ही बातें कर रहा हूँ हर बार की तरह। चलो ये तो गेम में घुसता है। जब कोई आ ही नहीं रहा है तो क्या मतलब है इंतजार करने का। दिल दिखता है रोज, कोई आता नहीं है। चलो इधर भी कोई नहीं आया। एक सेकंड दो गाइस, एक सेकंड दो। हम्म, सॉरी गाइस, थोड़ा दोस्त को बुलाना था। गाइस तो हमें ही
आने दो जनाब को। तो थोड़ा पिन- अच्छा जी। अच्छा जी। आ गए। क्या हाल है? थोड़ा छोटा लग रहा है। हेलो हेलो हेलो। वीडियो कैप्चर डिवाइस। हेलो जी हेलो। ठीक है। ठीक है। भाई पापा ने पहचान लिया तुझे। हैं? नमस्ते बोल रहे हैं अंकल को फिर। नमस्ते अंकल जी। कैसे हैं सब? क्या चल रहा है घर पे? अंकल बोल रहा खुश रहोगे तो। थैंक यू अंकल। और बताओ क्षितिज भाई। और सब कोई ठीक है घर पे? तो थोड़ी देर में भी आप। मैं कहूँगा सब खेलेंगे। हाँ आ जाए, एक और दोस्त मेरा आ रहा है। आ जाए जल्दी। साथ में खेलेंगे फिर। भाई क्षितिज एक बात बताना, उसके तो टीवी पे तो नहीं देख रहा है नहीं है? मतलब ऐसा स्पीकर पे देख रहा हो या टीवी पे देख रहा हो तो बता दे भाई। कहीं गलती से कुछ ऊपर नीचे हो गया। वही है। वही है ना, अपना ही आदमी है। सर क्या बढ़िया है सर। आवाज आ रही है? अच्छा। आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तेरी तो आ रही है। आ रही है, आ रही है, तो मुझे भी है। एक सेकंड रुक जाना भाई, वो एक और मेरा दोस्त आ रहा है स्कूल का। कोई नहीं, वेट करो। कोई इशू तो नहीं? क्या? कोई इशू वगैरह तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। चलेगा। क्या खेलता क्या है? आ, सब कुछ खेल लेता है। भाई जल्दी आ जा, बेइज्जती मत करवा देना। अरे ऐसा तो होगा। नहीं, बेइज्जती तो वैसे मेरे भी। भाई तुम दो। मेरे जितने दोस्त है जान पहचान सब बढ़िया खेलते हैं मेरे को छोड़ के। मैं सबसे कैरी होने आता हूँ बस। कौन सी रैंक पे है? आ, उसका अकाउंट एक बार दिख जाए तो पता चल जाएगा।
शायद वो भी सिल्वर पे ही है। अच्छा हाँ। कि ज्यादा नहीं मरवाए हो तुम अपने पिछले 5-6 मैच में? भाई बहुत गंदी लगी है पिछले कल 5-6 कल में। की स्ट्रीम देखा था और नहीं देखना था, मैं तो सोचा था डिलीट कर दूँ वो स्ट्रीम। फिर बोला नहीं, रहने दो, यही बातें तो बाद में याद आएंगी। सिल्वर 1 पे है वो, जेट, रेज, डेडलॉक, नियॉन, ओमन, रेना सब खेलता है। बस थोड़ा जल्दी आ जाए। डेथमैच लगाए तब तक। एक काम करो उसकी जगह तुम एस्केलेशन लगा दो भाई, डेथ मैच से मन उठ चुका है। ओके। जैसे डेथ मैच में स्पॉन होगा 25 तरफ से गोली मार रहा Match found. ऐसे बड़े प्लेयर के साथ तो नहीं खेल पाऊंगा। अच्छा हुआ डाउनलोड नहीं किया पीयर प्रेशर में। अबे कर ले भाई, आ जा खेल ले। Warm देख up. ही रहा है। कौन हमारा दोस्त? हाँ, ये अभी सेम कंपनी में है वो भी, मतलब सेम साथ में ही है हम दोनों। क्या जिम में गई? हाँ हाँ, एक बार तेरे से बात कराई थी मैंने, वो एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछ रहा था तो। अच्छा यही है वो। हाँ। नहीं, जो आ रहा है वो कोई और है। ये चैट में एक बंदा है। Fight. आ गया अपना बंदा। कुछ ज्यादा ही पैकेट लॉक हो रहा था। मैं अभी भी रॉकेट लेके घूम रहा हूँ। अरे यार शिट। शिट। चलो कम से कम इस मोड में तो सोवा से बाहर निकले। हाँ ठीक है भाई। fuck। Dominating. क्या किया मैंने, क्या किया? क्षितिज भाई 2 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ। मतलब ये गेम खत्म होते ही आते हैं। गेम है भाई, एक नहीं लगा। ठीक है भाई। fuck। भाई वो बहुत आगे हैं भाई।
Target down. भाई That's a kill. भाई 2 किल लगे हैं, दोनों किल तुक्के में लगे हैं। fuck. One less. ओ भाई See ya. Oops. ओके आई कैन डू। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। Fuck you, Shubham. भाई काफी हो गया। आकांक्ष भाई लगा दो। ये ऑफलाइन दिख रहा है ये है अभी। ना ना, ये तो ऑनलाइन है। क्षितिज भाई हो सकता है घर पे पेरेंट्स होंगे, नहीं कह रहा है अभी। अरे 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 गोल्ड। अच्छा है क्या? क्षितिज भाई ये जो प्लेयर 0 है ये मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं, अभी पुणे में है। और ये इक्लिप्टर भाई मेरे स्कूल फ्रेंड है। क्षितिज नाम है इनका। प्लेयर 0 का नाम आकांक्ष है। अच्छा 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 अच्छा। हम्म।
Match found. Forward. It was Wherever they run, I will find them. भाई जो भी लोग चैट में हो भाई लाइक कर दो यार एक बार। 3 लोग जो हैं और तीनों ने लाइक नहीं किया है। 2 लोग तो कर ही दो। आ गया सिस्टर का सोवा। ठीक है भाई। टाइटल देखोगे ना, टाइटल ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है सोवा गेम प्ले। ठीक है। बकचोद। अरे यार। जो सोवत है वो खोवत है, याद रखना। भाई खो तो मैंने उसी दिन दिया था भाई, जिस दिन वो छोड़ के गई थी। I believe in all of you like I believe in myself. एक तो उसकी आँख। भाई ये बीच में हार्ट आ जा रहा है तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। एक तो उसकी आँख जल्दी दिख रही है। नहीं चलती भाई वो मेरे स्टैंड। चलो पीछे। ऐसे एंट्री कर रहा हूँ। Scanning ahead. अरे आओ ना साथ में, पीछे क्या करते हो? एक राइट में राइट। अरे यार। Reloading. लो। Last player standing. One enemy Hostile remaining. down. बस जा प्लान कर। ये मरेगा। Spike planted. Barrier deployed. कहने वाला No था। escape. मैं कहने वाला था Clutch. अरे ना। कि I AFK have होगा वो। seen death, and I am not impressed. नाइस वन। Okay, Deadlock. Let's see more of that eye. भाई आयुष इसमें डाला करना मैसेज में लाइव है। क्या हुआ? बोल रहा हूँ डाला कर मैसेज लाइव लाइव है तो। Reloading.
Reloading. स्क्रीन स्नाइप कर लेंगे यार और क्या नहीं Revealing मैच खत्म area. होने के बाद बोल रहा हूँ मैं Deploying drone. Enemy tag. साइड के अंदर आ जाओ Reloading. Shock dart. Down. अरे नहीं Spike planted. Barrier. Reloading. Shock dart. Reloading. One my enemy God. remaining. अरे नहीं Careful. तो पीछे Reloading. Revealing area. Reloading. हाँ ऊपर है क्या? Flawless. लाइव वैसे अर्न करना पड़ता है लाठी। We should do. I'll tell you. We should win. शुभम भाई बात तो सत्य कह रहे हो, बात सही कही है आपने, लेकिन बहन जो पूछा नहीं किसी ने, है ना, मुंह बंद रखो, पूछा नहीं है। Oh, shite, I वो love नरा आदमी There. Reloading. Scanning ahead. No peeking. Reloading. Reloading. Feeling fat. Enemy spotted A. Here. Spike planted. बोल Thug. अरे One enemy remaining. चल कोई नहीं मार लेना रुक इनका जा साइड छुपा है Enemy पक्का पिक मत दे spotted भाई A. पिक मत दे प्लांट Capped. अरे नहीं Scanning ahead. आजा लाडले। नहीं आएगा नहीं आएगा सेव करेगा वो We could have ruled this world together. मर गया Reckon we're just better, aye? छुप के बाहर कर ये माइंड था तो मैं चल Need a drop. Need a drop. Reload. Need a drop. Thanks. You can't catch अरे us. वाह Reloading. Reloading. पूरा मार। Enemy spotted A. मिस कर दिया Revealing area. Drop in the scope. 120 neon और 40 jet Throwing net. I shot something. Drop in a smoke. One less. Ultimate ready. अबे Pull them to their grave. Nothing there. Reloading. That's a kill. One enemy remaining. I've survived much worse than you. ओहो I still can't get over that owl, Sova. It's too cute. भाई मेरी फेवरेट Why is it so cute? गाना सुनो 3 लोगों से लाइक कौन मांग रहा था थोड़ी देर पहले? नहीं लाइक मांग रहा था लेकिन ज्ञान नहीं मांगा था ना मैंने। तूने भी उठाई क्या Alright, muckers. Off we go. Over there. Revealing area. अरे यार शिट। वाह 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 अब आप सर बहुत आगे जाएंगे और रिकॉर्ड Deploying drone. Reloading. है उसका Dropping नहीं smoke. नहीं नहीं
उसकी स्क्रीन पर Spike down B. Die. आ गए पास ही हूँ। Spike planted. Not ready yet. यहीं रहे बैठ हमारे राइट Last player standing. एंटी थोड़ा सा हक दिया पाजी मैंने, थोड़ा सा। We are strong because we are together. Don't forget that. भाई कर थोड़ा सी आ रही है मेरे को। लो कर लो बात। एक्सचेंज करते हैं। अरे आप प्रोटोकॉल Reloading. मत आना इधर, मत आ। Stealing sight. ऐसे में ज्ञान कौन नहीं। मरा? सोवा। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। ऐसे में ज्ञान नहीं दूं तो क्या दूं? लगता तो एक बार। Bye. अरे वाह। One enemy remaining. भाई एक भी Remember what worked and test them again. ये स्पेक्ट्रम इतनी बढ़िया लगती ना। आप यहाँ स्पीक करना है और हम आपका वेट कर रहे थे। अरे मैं It begins. What do you need? क्या लगता है इस बारी जाएगा जाएगा जाएगा। You want See, to Jaggi, get man. Let's play. जाएगा एंगल भाई साहब, एंगल। यार बंदा की चलती Shot done. Take flight. ड्रोन कर रहा हूँ। Cutting their vision. Reloading. Throwing net. I am the hunter. Thug. अरे नाइस। Out of charges. जाना लौड़े। Cutting their vision. I want of these. Scanning ahead. Found them. No peeking. Spike down B. I got the spike. 132 स्लो। Reloading. One enemy remaining. Three. Over कर there. प्लांट कर मैं देख रहा हूँ। 30 seconds left. Spike planted. दो में Last player standing. ओह शिट। Is ready. सॉरी भाई साहब, आपका ये चला गया। कोई बात एक निकाल रहे बहुत 14 एचपी बचा था 5 बार नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है आप निकाल लेते। मुझे नहीं है, तुम्हें भरोसा है। यस सर, मैंने आपको देखा है सर, मैंने देखा है गेम प्ले सर। Revealing area. चल एक काम करते हैं ये चलते हैं। Stealing sight. इधर ही है डेडलॉक में, जहाँ पॉइंट कर रहा हूँ आप। थैंक यू।
देख मिड कौन देख रहा है तुम सब साइड में Last player standing. क्या वॉल करी है इसने कोई नहीं ये ना You know, I could just outlive them. Need a drop. भाई कुछ और लिख के भेजना जरा ताकि तेरा जेएन वाला पढ़ सकूं मैं। मुझे फैंटम चाहिए भाई Reloading. Reloading. तेरे पास लास्ट कौन देख रहा है? Revealing area. No peeking. Still in sight. Take flight. अरे यार ये Fuck. Spike down A. घटिया aim. Last player standing. Like I never left. Last player standing. Anti भाई. My quiver is never full. Reloading. ये जो एम है ना लेजेंडरी है। ठीक है भाई। Scanning ahead. Deploying drone. Spike down B. Last player standing. हाँ They don't have a single life worth saving. बीट एक करो तुम ये प्लान कर आवाज Scanning ahead. अरे भाई आवाज करना ब्रेक का पॉइंट क्या होगा है यहाँ पे चलो चलो निकलो। भाई पागल है क्या अरे यार Spike down A. Refreshing. Revealing area. Last player standing. Last round in the half. We lose everything after this. Spend it. Reloading. Reloading.
Revealing area. There they are. भाई क्या ब्रो जेट क्या तेरा एम हगा तू मैं एक भी शॉट नहीं मारा क्योंकि उसने मेरे को क्लिक कर दिया क्योंकि तेरे को पीक लेना था तो वो भी नहीं किया अरे मैं तो स्टन हो गया था Last भाई player मैं तो पीक standing. लेता स्टन हो गया था मैं तो चैम्बर से मरा हूँ This familiar. मैंने तो ट्राई Boy, I'm pissed. हाँ ये क्या हुआ ये क्या था? इधर कैसा है Switching sides. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? तुमने इतना बोला है ना शुभम भाई। थोड़ा आंसू निकालने थे। 30 seconds left. Scanning ahead. One enemy remaining. Spike down A. Spike spotted A. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. देखा मेरे आते ही गिर गया। इसका पीक लेता हूँ ऊपर प्लीज Scanning ahead. इधर 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 ए अभी वापस जा रहे भाई कमिट नहीं किया है ध्यान है लोकेशन मत देख मिड है मिड देख हमारी तरफ आ सकते हैं अरे मारना क्या कर रहा है यार Spike down B. One enemy remaining. Revealing area. राइट साइड घुस गया हूँ 30 seconds left. तेरे पीछे आएगा अरे यार
लो है 10 seconds left. Last player standing. Viewers don't get a reset button, so stay alive, please. Need a drop. Revealing area. On my mark. Need help. Current revision. Spike planted. मैं लो अरे My ult ready. They will cover. Last player standing. ये कहाँ गया भाई? ये क्यों किया यार? My ult is ready. Go. I got things to do. मैं सेव कर रहा हूँ. तेरे में पैसे Track them down. Scanning ahead. B है और B. मैं मिड देख रहा हूँ. एक मिनट पे भी है तो मिड देख और बी ए चले जाना. मिड पे है एक जेट। Last player standing. 140 हैं? चेंबर वन Spike planted. और कोई नहीं गन ले ले मेरे यहाँ पे बैठ के। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। अबे हट यार. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? ये जेट कुछ खेलता रहा नहीं फालतू का. आगे आगे जा रहा बस. Reloading. Scanning ahead. मिड से गए दो दिन. क्लोव भी पर रहना. जेट को मार दो. 101 क्लोव और Spike planted. Target down. ये जेट को खेलना तो आ नहीं रहा फालतू का. Last player standing.
A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old ways are best. बोल भाई. Get out of my way! Revealing area. Reloading. Deploying drone. Enemy marked. Target down. My ult's ready. कैसे? Spike down A. कैसे? One enemy remaining. मैं दिखा उससे पहले मार दिया मेरे को. As much as this world hurt me, it's भाई जेट कुछ तो है सामने वाला. kill to defend it. कुछ अलग ही लेवल पे, या तो स्मर्फ है या चीटर है भाई. भाई. बस 4 राउंड नहीं मरा हूँ मैं. चलो जेट से तो बेहतर ही हूँ मरने में. You want to play? Let's Scanning play. ahead. Need help. Off your feet! Take flight. Spike planted. Gone. चल ना लौड़े. Yes. अरे No peeking! Last player standing. We got this. Reloading. नहीं चलेगा. Revealing area. Barrier deployed. Take flight. Neutralized. My ult is ready. Out of charges. Shock dart. Shock dart. Still in sight. Out of charges. Spike planted. भाई कहाँ से मार रहे हैं ये लोग? Cutting their vision. Last player standing. शुभम भाई, I need you. Where are you? That's a kill. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. बनाओ. Blocking
Revealing area. Watch this. पीक तो I am the hunter. बहुत निकले मेरे पास तो गन भी नहीं थी भाई। Spike planted. One enemy remaining. हाँ साइड है क्लोज जा 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 साइड आजा आजा इसके साथ आ रेना Drop in a smoke. गन चेंज कर रहे शॉटगन ले ले Last player standing. Like Last I player never standing. left. Clutch. Match point. If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. भाई अब ना गुस्सा आ रहा है मेरे को, ठीक है। मैं देंगे तो साइड Scanning ahead. Deploying drone. Enemy tag. Pulling them in. Target spotted. A. Throwing net. Shock dart. बढ़िया। Spike down A. One enemy remaining. Drop in a smoke. Last player standing. अरे भाई अब मत देना यार यार नीचे से आप पता ही नहीं चलता भाई, ये तो अचानक से आ जाता है। सही देख रहा वो साला बहुत धन्यवाद भाई साहब। Need a drop. Mistake. Thanks. I could use a drop. अब मैं देख रहा हूँ भाई मैं एक और ड्रॉप ले लूं मैं Thank you. तो दोनों ही काम नहीं आ रहे ना बस किसी को भी ड्रॉप दे दूं क्या ही जरूरत है You want to play? Let's play. Revealing area. ओ यार राइट था उसका। कुछ गन है तो Multiple enemies B. Hi. Had your fun. My turn. Spike down B. मिड से दो, मिड से दो। वो ब्लो भाई कहीं तो देख लो Last player standing. Okay. Attackers win. -16 अच्छा भाई साहब अपने सारे प्लेयर नीचे हैं भाई, क्या बात है। सारे प्लेयर अच्छे खेले हैं।
कॉम्पी मत लगा भाई। क्या लगाऊं भाई? कुछ भी लगा दे कहते हैं भाई। चल लगा दे, चल लगा दे। अब माइनस लगा तो क्रॉन्च चले जाएगा। आयुष और जब किस्मत में लौड़े ही लिखे हैं तो लगेंगे ही। नहीं भाई, जीतेंगे जीतेंगे, ये वाला मैच जीतेंगे भाई। जीत लेंगे भाई। पता नहीं यार, नया माउस लिया सबसे साला सेंसे का दिक्कत आ रही है। समझ नहीं आ रहा कौन सा सेंसे रखूं। Match found. अरे भी ये शुभम बता क्या खेलूं, जल्दी बता। जल्दी बता क्या क्या पिक करूंगा। जल्दी जल्दी। सोवा के अलावा भी भाई लोग हैं, तू बता, मैं वो खेलूंगा, बता। 16 सेकंड है अभी। सेज 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 भाई, सेज ले लो। अबे तो वो तो बता सकता Wherever है, they run, I will find them. वो तो बता सकता है ना कैरेक्टर। जहाँ लिस्ट दिख रहे हैं कैरेक्टर्स के, वहां पे फर्स्ट रो में ये कॉलम या ये नंबर फर्स्ट रो से सेकंड। रैंक अप में What's the एक mission? वेट समझते For a हो क्या? contract? Sorry, I forgot रेना to भाई, take leave. हेलो क्या भाई? हेलो, आपका रैंक अप मैच है ब्रो। भाई रैंक अप मैच है कि तेरा भाई? बताओ तो सही भाई। चल तो भाई उनकी गांड फाड़ देंगे भाई, आ तो सही तू। क्या भाई हो आ रहा जा है यार, ये? सोवा यार। क्या हो गया ये? पता नहीं है। मैं भी तुम्हारे तरह एकदम प्योर बैठ हो गया। भाई तुम ए जाओ, मैं बी फेक करता हूँ भाई, ठीक है? द यू मीन शुभम भाई? तो तुम ए पे फेक कर, मैं बी जाता हूँ भाई। दो ठीक सेंटिनल कर जाइए, ठीक है? उनके बाद ना भाई, सेज तो ऐसे ही टाइम पास हो उसकी मौत खाओ। Scanning ahead. और ये क्या हो रहा है भाई? वो सपोर्ट कर उसका तो। फॉरवर्ड कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कर दिया तो अबे अरे भाई, तो सभी मर गए भाई। Plant the spike. Sensor down. नियॉन ने 85। नेक्स्ट तो पास Kill confirmed. रास्ता बाहर है। Focusing. आईएसओ Got one. Throwing next. बच गया। Last player मर standing. गया।
हैं? ये को One enemy remaining. अबे यार फक भाई जीतने वाला राउंड था तो भाई होल्ड करना था भाई। अबे यार सॉरी यार मैं समझ में नहीं आया क्या होगा। मैं पिरोन हुई हूँ ना भाई। आसान I'm और इसका रैंक का cold. I wouldn't be caught dead in that outfit. रैंक ऐसा का बहुत खेल ऐसा ऐसा भाई स्किन तो दे दो भाई गोश्त दे दो भाई गोश्त। I need a gun. I need a gun. गोश्त दे दो भाई। I need a gun. नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए भाई तू गद्दारी खोर को उसको दे दिया हमको नहीं दिया भाई तू गद्दारी खोर पे। No peeking. चल भाई Scanning ahead. No escape. Blocking movement. Drop in a smoke. Spike planted. Ultimate ready. Reloading. Hold them. Enemy spotted B. Reeling them in. Target escaped. Target down. Stage 130. Stage 130. इजी One enemy remaining. मेरे को मजा आ जाएगा भाई। आपके मजे के लिए नहीं मरूंगा लेकिन खुद से गलतियों से जरूर मरूंगा मैं। पिक मत कर पिक मत। Last player standing. अबे यार क्यों लो पिक मत करियो। पागल है भाई ये नहीं आता भाई इसको खेलना। डेडलॉक बहुत मार रहा है डेडलॉक को पकड़ो यार। Those तू fools उसका just तोड़ रहा। wasted their advantage. Bro, 130. Reloading. I could use a drop. Over there. तुम एक फेक करो ना सुअर डार्ट डूट मारा है एक हम भी Need a drop. और फ्लो ठीक है। Break away. तू इंतजार कर इंतजार। ऑन कर सोवा। Revealing area. मूवमेंट Breaking them. फ्लो मेरे पास आओ पुश कर रहे हैं मेरे पे। चला ऐसे चला. Feeling safe. भाई लेफ्ट है नियान ब्रो. भाई जब पता है वहाँ पे बंदा है रिवील तो किया था भाई। नहीं किया था। फोन में कर दिया ऐसा फोन में कर दिया spawn पे नियान spawn पे नियान. Last player standing. कौन सा आ गया यार वो नियॉन साला। Sensor tripped. Throwing net. यार भाई इससे होल्ड नहीं होता यार। उन्होंने तो पहले कहाँ कूदा मैं। इजी है बस ऐसे आराम से खेलो थोड़ा। Their death demands अब our हो रहा दिमाग attention. खराब। Saving credits. सेव राउंड I वेट need a सेव। gun. इसी बोल रहा है। इजी फॉर हिम नॉट फॉर मी। I need a Their gun. gecko is mine. Ghost bro. No escape. Target spotted A. Revealing area. Deploying drone. हम लोग भी हैं वो भी हैं तीन बंदे हैं पे आवाज मत करना Shot रोटेट करते टाइम। नेक्स्ट टाइम तो नहीं आ रहा
Reloading. Reloading. निया मत करो Reloading. है ना कोई तो कोई तो देख लियो कोई है तो नहीं 73 किलो Last player standing. तो भाई राइट राइट पे दोनों साइड पे Here, catch. Enemy remaining. घुस जा बस घुस जा बढ़िया There's a name for this. Oh yeah. अब If I may, I'll go in first. बढ़िया बढ़िया Fill ग्लोबल out their numbers. बे ए पे ऐसे एक साइड पे मत जाओ सबके सब एक प्रेशर बना के रखो जा ए पे जा ना सॉरी बी पे सोवा पुश मत करियो होल्ड कर थोड़ा यहीं पे होल्ड कर अबे ड्रोन मत करियो डेडलॉक डिस्काउंट No distraction. कैसे भाई कुछ अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं लोग ये आम इंसान नहीं है Last player standing. You're right. बोलता शिवा पुश मत करिए Act पुश करना on my पता भी है intel. भूत के क्या Don't होता है give them time to reposition. फ्लो अंडर पुश मत करियो वहाँ बैठे बैठे ज्ञान चोदना आसान है बस अब पुश का मतलब नहीं मानना मत बोल पीक भी नहीं था वो No peeking. Scanning ahead. I'll check mid. Right here. Found them. Like I never left. Making cover. Think I'll stay. Refreshing. Shot down. Drop in a smoke. Last player standing. भाई क्या जीरो किल्स पे है भाई इसको हटाना पड़ेगा मार के Every fight is a lesson. अपने अब बहुत हो गया भाई क्या भाई डेडलॉक चल रहा है क्या Embarrassing. I check किए you guys Scanning ahead. और प्लेयर चला Take flight. Enemy tagged.
Revealing area. Spike planted. My ult is ready. Last player standing. Forgive me if I overextend. Old habit. Go under. We need a new approach. सही बात Scanning ahead. Drop in a smoke. Shot done. Enemy spotted mid. Reloading. Last player standing. Spike down mid. One enemy remaining. Refreshing. मेरे तरफ सफेद जा रहा है और कुछ नहीं। Clutch. Level heads until we're home, yes? Good. अरे भाई अपनी स्किन से खेले भाई हर राउंड आ जा रहा है Reloading. Reloading. सॉरी यार, Revealing अबे area. यार अच्छे से राउंड बहन चोद। अबे यार मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, वैसे तो ऑन ही नहीं हो रहा इसमें से। अब सॉरी यार। Take flight. Enemy marked. Shock dart. अबे सोवा क्या कर रहा है? अबे तो स्पाइक पे ले आते हैं। Enemy spotted B. My territory, my rules. Like I never left. One क्या enemy करूं remaining. भाई? No peeking. Right here. I'm pissed. अरे भाई ओके भाई। exceeded. रेना भाई तुम्हें आवाज आ रही है? हेलो हेलो रेना भाई यार मेरा यार पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया, बहन चोद तो ऑन ही नहीं होके दे रहा। कौन डू गेम बहन चोद। सॉरी भाई। Reloading. Over there. ये तो 5 है Over ना? there. कैसे दिखाऊं मैं? Over there. नहीं दिखा सकता। We win. We survive. Deploying drone. Getting sight. Reloading. Scanning ahead. There they are. नहीं यार। Spike down A. Out of charges. Shock dart. Planted. Shock dart. एक नेक्स्ट है, Last नेक्स्ट है। player standing. तो एक नेक्स्ट है। अल्ट कर सकते हैं।
One enemy remaining. Out of charges. कोई बात नहीं, बढ़िया। यार क्या हो रहा है यार? What do we learn by fighting ourselves? Thinking out loud. Need a drop. I need a gun. I need a gun. Thank you. Eyes up. Scanning ahead. Out of charges. बहुत बढ़िया गन। थैंक्स। They went to A, they went to A, they went to A. Come to B. Reloading. House was Drop in a smoke. Revealing area. There they are. One enemy remaining. Guys, Sage is there, Sage is there, Sage is there. चेंज अपने स्पॉन साइड गई, यहाँ गई, यहाँ। No escape. सेव कर, सेव कर, सेव कर। सेव कर, आप सेव कर। Last round before the switch. Spend everything on this one. इतना बोलने के बाद सपोर्टिव ऑडियंस नहीं बोल सकते आप खुद को, बट थैंक्स। थैंक्स। I need a gun. I need a gun. Thank you. Time's up. Let's go. No escape. Revealing area. Enemy spotted B. Deploying drone. Enemy tagged. Right here. Need help. Spike planted. Ultimate ready. Silence. You will not kill my allies. Hold them to their सपोर्ट grave. मतलब कि स्वयं की जिंदगी वाला बिजनेस एबिलिटी नहीं है। Drop in a smoke. Reloading. They couldn't save you. Throwing next. Last player standing. मार। नहीं यार। फक भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। आने तो शुरू हुआ है। Switching sides. Listen up, you और muckers. साथ में सिर्फ 2 If I किल don't किए get हैं। back up, just give me a nudge. I might not be dead. Just take a recap. I need a gun. Thank you. So you can play mid, I'll go to B.
Scanning ahead. आई तो पीछे आजा पीछे आजा पीछे आजा। नहीं ना बी पे ही रहे, वो बी पे आ सकते हैं। ठीक है क्या बी बी रोटेट करो गाइस, बी रोटेट करो। क्लोज स्मोक दे बी पे। स्मोक नहीं है क्या? बढ़िया 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 इजी। Scanning ahead. एज के फुल डैमेज। Shock dart. यार ये 131 Spike planted. 831 85 के को Shock dart. Shot down. One enemy remaining. नो करने दे। लो Thank you. Returning to post. लग रहा है जैसे पहला राउंड है जो 4-12। We go so far. मैं उसको किल चला गया वैसे से। Take out their healer. Revealing area. अरे भाई आओ जल्दी आओ। Take flight. जल्दी जल्दी बी जाओ रोट कर दिया बी रोट कर दिया। एक है सेज है उधर अभी ए पे ही। नुमान सारा कुछ दिन आप तो बेंच हो। सारा फोन से आएगा मादर जा। Gun here. वो यहीं पे ही रहते हैं यार। क्या प्लांटिंग बी प्लांटिंग Spike planted. No peeking. Making cover. Drop it. Show me a target. डिप डिप पे आप डिप कर आप डिप कर दे आप डिप कर आप डिप कर। One enemy remaining. Now I can focus. अबे 50 हो गया। अबे डिप पे ध्यान दो यार तुम लोग। बढ़िया डिप कर दो। Dancing vacuum deactivated. ओए बी पे एक बंदा रहो हमेशा। वो लोग रोटेट मारते हैं चूतियां हो इनचो। Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. मैं जा रहा हूँ डी बी पे इस बार, तुम सब ए पे जाओ मैं कैसे देखूंगा। कैनी भाई वंडर जाओ जाओ गाइस जाओ। तो कैनी भाई थैंक यू क्यों ये ऐसे गिव हियर मैन ये रियल थैंक यू। No heroics. Follow protocol. Revealing area. नीचे आ रहा है गाइस मिड से Reloading. Last player Stopping standing. fire. हेडलॉक ऑफलाइन चल। Find the weakest link. Kick him in the shin. ब्रो वंडर headlock gone bro. Shit. They'll push I think A okay.
Scanning ahead. Nothing is on the bright side in this game. Take flight. Yeah, they came. They came inside. Spike planted. नहीं यहाँ पे क्लो यहाँ बैठी है अबे यार fuck 74 क्लो. Last player standing. अबे fuck अबे यार मैं डिस्कनेक्ट हो जाता बार यार मैं क्या करूँ यार बहन तो this game में टूटिया बहन चो. Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. भाई अनइंस्टॉल ही था अभी इंस्टॉल किया तभी तो ये सब हो रहा है. So I'll play mid. I'll play mid. Bring your best. Just Q count. Revealing area. है क्या ये पे? Nyan is coming here. Nice. बंदे अंदर बंदे हैं यहाँ पे बंदे हैं इवेंट पे बंदे हैं. Spike down mid. Spike down mid. Target spotted. Mid spike. One enemy remaining. Shock dart. वेंट्स में Take that round. Flawless. Scanning ahead. Very good. You're all more important than words in a brief. Look out for each other. I need a gun. Thank you. Bro, just to hold the site, okay? Don't leave. Revealing area. नहीं मैं देख लूँगा तुम बी देखते रहो. I'll check B. बी ए पे दरवाजा तोड़. Deadlock B. Try again. My ult is ready. Deploying drone. Deadlock B. I think he's rotating. Revealing area. Sage A पे. No distractions. नहीं यार. Fuck भाई सोई गए. Sage is going mid. You will not kill my ally. They are planting B. Spike planted. Had your fun. My turn. Last player standing. 94 neon. Woo! My territory, my rules. Nice. My ult is ready. Refreshing. Anti. I'm ready. Under there. I need a gun. Buy just hold by 1d4 rounder.
Ready. Scanning ahead. ऐसे जल्दी आओ, ये पेकलो आ जा। Enemy spotted mid. My ult's ready. No peeking. Reloading. Oh yeah! Monster on the loose! Take flight. Nothing there. Enemy marked. Revealing area. Found them. One enemy remaining. Spike down A. Hell. There's no need for the enemy to suffer. Vandal. Kill them fast. I need a gun. Bro, can you buy? Can you buy? Thank you. This is business. Scanning ahead. B, 1 2. Take flight. B multiple. जा Enemy बीजा, tag. बीजा, ऐसे बीजा। तो घुस गए यार। Like I never या बीजा, बी पे जा, बी पे बंदा मिलेगा। Shock dart. बढ़िया। Spike down B. One enemy remaining. वो ये साइड थी, पुश कर दो। Scanning ahead. Gun here. Don't push, bro. drop in a smoke. 30 seconds left. Revealing area. 10 seconds left. Enemy spotted. Outside. Okay. Look इधर 4 के। Breathe. Then commit. ऐसे one. I need a gun. Thank you. कोई आइसो को भाई दे दो। I need a gun. Thank you. भाई दे दे यार आइसो को यार कोई तो। रीना भाई दे दे आइसो को। Yeah. Ask. I bought. क्या है उसके पास देना? उसने ले ली किसी और से। Scanning ahead. I need help. Deploying drone. No more. One enemy remaining. हेड लोग यहाँ पे अंदर घुस Spike जाओ, down लो mid. लो वेंट्स में जा Have one of these. Reloading. आइसो यार हद हो गया यार। ओए साइड पे घुस जाओ। स्पाइक हम पे सोवा पे जाओ। मार दे, सोवा मरेगा तू। Revealing area. There they are. देख कितनी Out of पूछा charges. मुझसे। Bye. अबे Easy. यार। 1 Last player standing. bro. क्या भाई यार। 1 3 1.
30 seconds left. Drop in a smoke. टाइम पे खेल उसको प्लांट करना हो, भाग रहा प्लांट के लिए. 10 seconds left. Spike planted. Refreshing. My turn. भाई क्लो भाई बचा लिए भाई आप. भाई ये 3 जने कैसे मर गए यार उससे, एक चूतिए से. No radiant for you, wee man. Aye, where to? I need a gun. अरे चला जाए शिट. Hey bro, what is this bro? That guy went again. ISO, you go to B, you go to B. Go to B, go to B. Revealing area. Multiple enemies mid. Take flight. Yeah, I know. Enemy mark. I am the hunter. Spike planted. One enemy remaining. Last player standing. Still in sight. Still in sight. Clutch. Bro. Sorry bro. Match point. Alright, lucky socks. Don't fail me now. My bad bro. What to do? This deadlock gone again. We have to win this match bro, at least somehow. अबे यार this is different यार. Sorry guys. Scanning ahead. Target down. Hi! I'm pissed! Spike planted. Focusing. Stopping fire. You will not kill my ally! One enemy remaining. My ult ready. Defuse bro. Shock dash. Deep bar. Deep. What the fuck? Reloading. It is over. When we go out there, someone dies. Carry that weight. ये deadlock आ गया भाई. Only one round by team. भाई किस्मत अच्छी थी. Only one round. देख रहा है तो सिर्फ 60 का डैमेज दिया है मैंने. 60 के डैमेज में ही मरा है वो. यानी उससे पहले किसी ने उसको 90 का डैमेज दे रखा है. For you, hermanita. Scanning ahead. Guys, So wait. So hold. spamming bro, just spamming. Yeah, wait. Okay. Let them spam. Oh yeah! Monster on the loose! No surprises. Sensor
Spike planted. Enemy down. One enemy remaining. Nice. Deep. Fast. Wow. No peeking. They're on out of breath. Always well. अरे डेटा हो रहा है I guess हो रहा है Switching sides. यार पता है मैं Overtime. ये है कि मेरा जो इथरनेट है ना वो मेरे इंस्टीट्यूट के आईडी से मतलब कनेक्टेड, तो पता नहीं जब भी मैं डाउनलोड करता हूँ ना नए बार इंस्टॉल करता हूँ वैलोरेंट, तो ये दिक्कत हमेशा आती है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है 4-5 राउंड, हर 4-5 राउंड Thank में। you. सॉरी यार। अच्छा तुम ए पे जाओ, मैं और एक बंदा बी पे No, जाते हैं। wait. Come here. Don't go like that. Come here. Take a kill easily. We can finish it. They will spam this round. Yeah, let them spam. वैसे रहना तो रैंक क्या है? Single round only, bro. तो 40 स्किल पे है। No. Revealing area. Deploying drone. Hold. Right here. नहीं यार स्पैम उसमें मत जाओ। अरे भाई सॉरी बैक स्टेप आ गया तो Reloading. Listening. स्नाइपर है मेरे सामने, बैकस्टेप दिखता रही हूँ। से आना Breaking them. Thirty seconds left. Last player standing. Spike down A. Show me a target. 10 seconds left. हम स्पैम करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। Switching sides. Match point. Enemies close. Eyes up. I need a gun. ये बी देख लेना, ए पे आते हैं ना तो मैं स्टॉल कर लूंगा उनको जब तक तुम रोटेट करोगे। Scanning ahead. ए पे आवाज नहीं है कुछ भी, बी पे हो सकते हैं। मिड पे स्मोक हुआ है। मिड पे Spike down B. Sage mid, bro. Sage mid. She is going B. Yeah, B planting. Spike planted. One enemy remaining. Last player standing. यहाँ पे। You will not kill my ally. One enemy remaining. Here, catch. ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर स्पैम करेगी। 50। Ult is ready. बढ़िया। अरे वाह यार, कमाल है। Clutch. Do I get a prize for that or what? Switching sides.
Overtime. Stay taut as a Skills निकालने की bowstring. कोशिश करो The और fight कुछ मत करो। demands it. ऐसा वांडा ऐसा वांडा ऐसा वांडा I need a gun. Thank you. I'll take है ना बी ए जा या मिड जा एक फ्रैक्स निकालो कहीं ना मिले तो I'll take mid you guys go to B I'll take या I'll find them. Revealing area. मैं यार सबके सब क्यों आगे कोई ए पे भी प्रेशर बनाओ यार ऐसे थोड़ी होता है यार वापस भाग रहे हैं आप प्रेशर बनाओ ये देखो प्रेशर पूरा लेफ्ट से गया ये देख प्रेशर बन गया प्रेशर अबे यार बैठे वहाँ पे वेट करता रहेगा तो बनी जाएगा ना Revealing area. Found them. Taken out. Last player standing. सॉरी भाई Switching प्रेशर नहीं बना sides. पाया भाई Match point. दिया मैंने भाई I need a gun. सरेंडर करेंगे यार अगर ये आज जीत गए तो 41 kills bro क्लो मेरी अपने मेरे उस पे खेल लियो Come into the unknown. mid check Scanning ahead. Takes. There they are. there come Enemy tagged. ठीक मत कर ऐसा तोड़ने मत मतलब उसको खड़ा हो जाओ वहीं पे अरे ना ये भी आ रहे हैं क्या ए पे वो लिया Destabilizing. Scanning ahead. There they are. this side right side is there अरे बक्कर Shock dart. Thirty seconds left. I think they'll go to B पिक मत कर सोवा पिक मत कर वेट 10 seconds left. Revealing Spike area. planted. पक्का भी राइट चेक long Last player standing. One enemy remaining. Well, that's just grand. nice anti bro anti Attackers win. अरे भाई तो खेलो मैं चलता हूँ भाई मेरे को
चलो फिर जाना। ठीक है भाई, इस सदमे से बाहर भी निकलना है। वो भी है भाई। गुड नाइट। सॉरी भाई यार। अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऑफिस नहीं जाना होगा, मैं खेल लेता। चलो बाय। क्या करे शुभम भाई, बताओ। हाँ भाई। तू खेल रहा है क्या? और भाई लग तो नहीं रहा है। सोच रहा हूँ थोड़ा माइनक्राफ्ट वगैरह खेल लूँ, दिमाग हटेगा भाई। तू खेलेगा अभी? क्या माइनक्राफ्ट? ना ना, वैलोरेंट। स्विफ्ट लगा दे। हैं? क्या कह रहा है? हम्म? कुछ कह रहा था क्या? मैं बोल रहा हूँ स्विफ्ट स्विफ्ट लगा दे, स्विफ्ट एक। आई नो ब्रो शुभम, आई नो। मेरे को पता था Match ना क्या होने found. वाला है। Actually, wait. My crew is coming through. जी शुभम, सही कह रहा है। They can't defuse a spike if they're dead. Enemy spotted B. Mosh pit. थोड़ा दूर फेंकना था ना। ओह, Bye bye. Watch out! One enemy Good remaining. luck. Spike planted. मैंने सोवा सूट कर दा। एक्स्ट्रा पाया था।
on, little homies. Let's get it. Reloading. I'm out of here. Dropping smoke. Dizzy's up. Watch out. You did good. On my mark. Right ladder. Reloading. Saw you, Mosh. Enemy. Up and away. बैठ गया One enemy remaining. Go get him, buddy. मेरी गन ले ले They shot my wingman. I got you, I got you. I'm over them. I'm out of here. दुश्मन को गोली मार दो चाव मारता हूँ चाव क्या होता है भाई Every choice matters. Up you go. Somebody's there. Destabilizing. Blow him up, Mosh. Run, little man. Sit down. Last player standing. Spike down A. Target down. Refreshing. My ult is ready. Joke's over. Pew pew. One enemy remaining. अरे 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 Brand new that one. Last round in the half. Spend your cash. Don't क्या look हुआ back. भाई Go go go. Need a drop. Need a drop. They're in our sights. I'm out of here. Enemy B. Dropping smoke. Dizzy's up top. Distraction. Someone's there. Reloading. हट यार Spike planted. मार दे Get him, wingman. Enemy spotted A. My wingman's down. Mosh pit. Last player standing. One enemy remaining. Back like I never left. अरे Team Ace. Switching sides. Next to my goal. This one time where I actually never mind. अल्ट अभी हो जाओ 6 किल या 6 राउंड हो जाने दो जो कि होने से रहे राउंड
6 किल का वेट करना होगा। जाओ हक दो बच्चा। Dizzy's up. Sana. Up and away. Dizzy has targets. Spike down B. One enemy remaining. Last player standing. I'll just let you think about that one, alright? Match point. Love it when they make it easy to drop. ऑलरेडी वो उस टाइम पे था, अभी नहीं है। लास्ट राउंड के आसपास था। I'm out of here. अभी देख, तेरे को स्क्रीन पे जो दिख रहा है जिसमें स्कोर्स हैं, तो उसमें जहाँ मी लिखा है, मी के आगे 3/8 लिखा है ना, वो दिखा रहा है अल्ट होने में कितना और चाहिए। तो 3 हो गया है, 5 और चाहिए। Dizzy's up top. Enemy coming through. Blow him up, Mosh. Go get him, buddy. Spike down A. Last player standing. Spike planted. Focusing. Breaking them. हाय, Hi. Fight's not over, you know. I'm out of here. Need a drop. Reloading. Take them one by one. Up you go. Run, little man. Over there. Spike down A. ये स्किल कहाँ था मेरा जब मैं नॉर्मल गेम खेल रहा था? You're dead. 30 seconds left. Multiple enemies.
One enemy remaining. You had Defenders it win. fun. For their sake, I'm glad it's over. क्या करें बताओ? बंद करें? बंद करें या शुभम भाई आप वैलोरेंट के लोर जानना चाहोगे कि वैलोरेंट का स्टोरी क्या है? बताओ। भाई बहुत क्रेजी स्टोरी है भाई, बहुत क्रेजी। सुनना है तो बताओ, लगाते हैं। इन गेम लोर बोल रहे हो क्या कहते हैं? इन गेम, इन गेम, इन गेम लोर। हाँ, सारे कैरेक्टर्स कि इन कैरेक्टर्स का उत्पत्ति और इनकी ये कब पहली बार इन लोग को मिले, वैलोरेंट बना कैसे, सब है। एक 1.5 घंटे का स्टोरी लाइन है, बेसिकली शॉर्ट फिल्म या फिल्म समझ ले। कुछ आज देख सकते हैं, कुछ कल देखेंगे, क्या कहते हो? हम्म, ठीक है, मोबाइल से ज्वाइन करने दे। अच्छा, Hey everybody. ज्वाइन करके बताना। Hey everybody, Jep here, and this is the entire storyline of Valorant's lore completely जहाँ रुकना हो तो बता देना, ठीक है? updated to current day in one video. As I'm sure you guys know, Valorant's lore can be extremely confusing, so we're going to break everything down and lay it out as if you are brand new to the lore. Timestamps for whatever you are interested in or what you want to learn will be in the description. Another thing is that some information in this video will eventually become outdated, especially if they're labeled as a theory and not officially canon yet. So if you enjoy Valorant's lore or want to stay up to date on everything new, you really should subscribe to the channel because I always post updates whenever they come out. This took me ages to make, so a like would be greatly appreciated. All right, let's get started. So, Valorant's lore takes place. एक सेकंड, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। पता नहीं रह रहा कि क्या हो जाता है इसको। हाँ,
in the near future on planet Earth. We used to know exactly when in the future due to the Duelist cinematic dating the timeline to the year 2039, which isn't that far in the future. The devs did decide to retcon that though and want to just leave it as a near future timeline. It might be safe to say it's still somewhere around that 2039 mark, but of course we can't be for sure anymore. Pretty much everything that happened on Earth in real life at this time aligns with Future's Valorant lore. The story takes a different turn from real world Earth events when the thing that started it all happened, the first light. Now, this strange thing that happens that the lore calls the first light was a worldwide phenomenon where a bright EMP-like pulse emitted, shutting down electricity to everything. Just imagine, in a blink of an eye, the entire world goes dark. Fortunately for Earth though, after a few hours, power was restored globally, but something happened. A new substance was discovered on Earth which was called radianite. At this time, no one knew what it was and has never seen it before. But when certain people got exposed to a significant amount of this new radianite material, they changed. These people can do things no one else could before. They were basically given powers and were called radiants after the material that gave it to them. Turns out radianite has an immense energy to it, and when refined in such a way can be used as power. Everything from the lights in your house to weapons and, well, people if the radianite allows them to become radiants. A company called the Kingdom took advantage of this newfound energy and uses radianite can offer. They eventually went on to power an astronomical 3/4 of the entire world's energy needs. But where did radianite come from? How did it get here, and where does the Valorant protocol come into all this? We'll answer all those questions right after we talk about Valorant Tracker, today's sponsor. All right, quick question. By now, it collects all enemy team. Beat that. Is everything your backer completely? Okay, so where did radianite come from? Well, if I'm being completely honest with you guys, we don't exactly know. One would think that it would have been the first light just shooting down radianite all over the place to Earth during those few hours of all the power being turned off, but no one ever reported any sightings of that. So it definitely wasn't shot down during it. So that means radianite has actually been on Earth for a long time apparently, and somehow the first light activated it, and that's when humans discovered it. Us humans are a pretty destructive species, wouldn't you say? We would have definitely found it before with all the mining and drilling we do before the first light happened. There are a few plausible theories that are definitely not confirmed as to how radianite has gotten to Earth. Some suggest that it arrived on comets a long time ago, while others think it may have been given to us by otherworldly beings called the Guardians. We are going to talk much later about the Guardians later on in the video, guys. Trust me, Valorant's lore gets really confusing, so you really are going to want to watch this video and pay attention because you will definitely get lost. All right, now this is where the Valorant protocol comes into play. People started recognizing that radianite can be incredibly dangerous if mishandled, so a multinational organization needed to be founded to protect people from disasters related to radianite, whatever that disaster may be. We don't exactly know who funded or founded the Valorant protocol, or VP for short, as it's never been 100% confirmed to my knowledge by Riot. But we do know that Brimstone and Viper were the first two agents to start the VP. Probably more so Brimstone than Viper because Brimstone was chosen to lead Valorant. So it may be safe to say that they are the ones that founded it. And it may have been funded by the Kingdom, the company we talked about earlier. After all, Brimstone was the commander of the Kingdom's private military security division, which was labeled KSEC, while Viper was the chief scientific officer on the Kingdom's board of advisors. Safe to say they funded it, but again, it's never been confirmed, so take that with a grain of salt. The VP started quickly recruiting agents onto the team as they see fit and can help out with their cause. We do know that Omen was a huge factor in helping start the VP as well, but what he did is a mystery. Since we're talking about Omen, this is a really good time to get started on his lore because his lore contributes a ton to Valorant's story. Omen used to be a human, and a terrible accident happened to him that tore him apart and turned him into the shadow he is today. So much of Omen's lore is shrouded, get it, shrouded, in mystery because Riot only gives us little crumbles of hints about what happened. We do know that Omen and Viper were at least close before the accident and may have worked together. Viper seems to know a lot about Omen and goes out of her way to keep secrets about what happened to him, since Omen has no idea because the accident left him with amnesia and can barely remember anything about his human life. I'll kill that Omen. I'll take his memories.
I will remember. We do have a few hints about what may have happened to Omen though. We have this one interesting voice line from Viper that seems to mock Omen about a possibility she has something to do with his death. One more time, Omen. How many times have you heard that now? So could it be that Viper somehow experimented on Omen with Radianite and that led to him dying by getting ripped apart? If you only heard this voice line, then it's definitely not looking good for Viper, right? And suggests Viper is the one who did this. Well, the main theory for Omen is that the First Light may have actually caused this to Omen. When Fade was the blackmailer for the Valorant protocol before she got recruited, she directed this message to Omen in her famous dossiers, quote, "First Light was not kind to you, John, or was it Fred? Everywhere I look, a new alias. Marcus, Johan, Dimitri, but no true name. Do you even know who you were? From what I found at Point Light, I suspect not. What sort of person has no name? Not an honest one. You are a monster now. Perhaps you were a monster before. If you succeed in finding your answer, I hope you don't regret it." Okay, so two important things here that Fade mentioned. She said that the first अरे मतलब वाइपर मेरे को बहुत इविलिश कैरेक्टर लगती है, मतलब उसके जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो सुन के थोड़ा लगता है कि भाई ये खतरनाक है, अगर मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आई थिंक यू गेट इट. The light wasn't kind to you. Does that mean that perhaps the First Light directly caused this to happen to him? She also says she traveled to Point Light and that what she saw suggests that Omen has no idea what happened to him. What is Point Light? Well, the running theory is that Point Light was the epicenter of the First Light. One would think where the most amount of energy originated from. Could it be that Omen was incredibly unlucky that day and was standing directly where Point Light happened on that day, which led to him getting ripped apart over and over again in his consciousness that led to his death? I survived obliteration. I will survive them. This player card shows an epic example that Sage at least had something to do with trying to bring Omen back to life once he died. At least is what it looks like. Perhaps the damage on Omen's body was so severe that after many attempts, Sage couldn't bring him back to his body and he was transformed into the shadow that he is. That makes Viper's "one more time" Omen voice line we heard earlier make it sound like Viper was actually present when Sage was there trying to save him, which may be the reason why Viper seems to have a grudge against Sage for failing her when Viper needed her. Sage, you're the only one who can keep us alive. Don't fail us now like you failed me then. I may be wrong about trying to connect all these voice lines together, but it does sound convincing, right? Let's remember though, guys, that Riot hasn't confirmed any of this and it's only been hinted at with player cards and these sort of vague voice lines. So once again, take it with a grain of salt. Okay, so I know I just spent so much time talking about that Omen story, but it's a major event of Valorant's overall lore. Omen, helping with the founding the Valorant protocol, was recruited and became agent number 3. The first Radiant on the protocol. After that, over the years, Valorant will recruit more and more agents for various reasons. They really do like to have humans or Radiants who are highly experienced. Killjoy, for example, was the lead of Kingdom's research and development division when she was only 18 years old. And the other agents all have incredible powers or are highly skilled with using weapons or tactics like Sova with his bow and arrow. One agent I do want to point out in particular is Skye, because her recruitment comes with a whole other story of its own. In Skye's trailer, we see her walking through a destroyed forest and comes upon a Kingdom facility with a massive rift above it. Skye doesn't believe what she's seeing, but Sage, who is talking to her over comms, is saying that these rifts are happening all over the world. She urges Skye to join the protocol, and she does. Now, these rifts are a weird thing, and it's going to get even weirder when I try to explain what they do and where they go. Get ready and listen because it's going to get wild. So have you ever wondered when playing Valorant why you are fighting the other versions of yourself? Like a Jet fighting another Jet on the other team, or a Cypher fighting another Cypher, and so on. Riot has a very clever way of implementing this into the lore of Valorant with, get ready for this, the Mirrorverse. Pay attention, guys, because you might get lost. At some point during Valorant's timeline, our Earth split into two,
creating a mirror verse. We don't know exactly when this happened, and many people assume it was around the first light, or perhaps even the first light caused this mirror verse to happen, but it has not been confirmed yet by Riot, so we really don't know. We do know that the two Earths are relatively identical in so many ways. For every person on Earth, there is an exact same version of that person on the other Earth. Stay with me, guys. I know this is getting pretty confusing. In the lore, our Earth, the one that we live on, is labeled Alpha Earth, while the other Earth is labeled Omega Earth. Our Earth is where everything I talked about so far in this video has happened. It's where our Valorant Protocol, Kingdom Corporation, all that has taken place. But on Omega Earth, they have the exact same things, but call them by different names. They have the Valorant Legion, and their kingdom is called Kingdom Industries. This will be very important to remember later. Store that in your brain for the time being, please. Jeppy will love you and give you a kiss if you remember that. One major difference between the two Earths is with Radianite and how Omega Earth is insanely more advanced than Alpha Earth with their Radianite technology. For example, all the Radianite crates on every map in Valorant are green. That means that our Kingdom Corporation mined, refined, and stored that Radianite in the containers that glow a bright green. There is an exception to this though, and that is on the map Fracture. Now, Fracture has a ton of lore. It's actually the site of an abandoned joint research facility named Everett Lind in New Mexico of the United States on Alpha Earth, run by Alpha's Kingdom Corporation and Omega's Kingdom Industries, with all the scientists and researchers both kingdoms employed there. We are going to talk much more about this later on in the video. But for now, all you need to know is that one half of the map, the green side, was run by Kingdom Corporation, while the orange side of the map was run by Kingdom Industries. Now, you'll notice that all the Radianite crates on Omega's side are orange. This indicates that it's a different form of our Radianite on Alpha Earth. What are the differences, besides the colors between the two, may you ask? Well, Riot never really gave us an official statement on that as far as I can tell, but we can theorize that perhaps their Radianite is more powerful or has different properties than ours. Omega Earth is leagues ahead of Alpha Earth when it comes to Radianite technology. For example, Omega Earth has teleporters that can travel between the two Earths easily, while Alpha Earth only has very short-range teleporters like what you see on the map Bind. That's why you see the teleporter terminal where Kingdom Industries employees travel to the Everett Lind facility on Omega's side on the map Fracture and not on Alpha's. Also, Omega has an entire organization called Atlas, remember that name, that explores other worlds in, get this, the multiverse. I'm sure you're wondering, wait, Jeppy, so there is a mirrorverse and now there is a multiverse? Yeah, there is. I know it's confusing. Think of it like this. The Mirrorverse is only Alpha and Omega Earth because they split apart not that long ago and are essentially a mirror. While the multiverse is your traditional definition of it, where there are multiple universes beside each other, all at different stages to a degree. Okay. So where are we going with all this? I'm saying that Omega is way ahead of us technologically and maybe due to the Radianite they have. Again, this is just a theory, but what if the energy produced by the orange Radianite is more than the green version, but burns out and depletes quicker? That could explain why we see Omega Earth with a shortage of Radianite, which leads to the gameplay of Valorant's lore. The attackers on every map besides Pearl, because Pearl takes place on Omega Earth, are the Valorant Legion from Omega Earth, attempting to steal Radianite from Alpha Earth by detonating the spike. While the defenders on every map besides Pearl, they'll be the attackers on that map, are the Valorant Protocol trying to defend our Radianite and environment by defusing the spike. समझे भाई साहब? समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? तो ये जो 4 मैप हैं सामने जो स्क्रीन पे, चोरी का मामला है। हाँ, सही पकड़े लाला। हाँ, ये जो 4 मैप हैं, इन चारों के नाम बता देता हूँ। जो टॉप लेफ्ट में है वो बाइंड मैप है, और टॉप राइट में है अपना ब्रीज मैप, नीचे लेफ्ट साइड में अपना एसेंट है,
और नीचे ही राइट साइड में अपना है हेवन मैप। तो ये जितने मैप हैं, ये सारे मैप में इस अर्थ का, जिस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, जिसका नाम अल्फा अर्थ रखा गया है, ये सब इस अर्थ पे चल रहा है ये गेम। एक्सेप्ट वन मैप, जो पर्ल मैप है, जिसमें अभी मैं स्विफ्ट प्ले जो खेल रहा था, जिसमें गेको वगैरह यूज़ किया था मैं, वो मैप, उसमें हमारे अर्थ के बंदे उधर जाके वो कर रहे हैं, उनको एक तरह से परेशान कर रहे हैं कि मत आओ, मार देंगे। समझ रहे हो? समझने की कोशिश कर रहे हो या मैं गलत समझा हूँ? एक सेकंड। As Pearl takes place on Omega Earth are the Valorant Legion from Omega Earth attempting to steal Radiant from Alpha Earth by detonating the spike. While the defenders on every map besides Pearl, they'll be the attackers on that map, are the Valorant Protocol trying to defend our Radiant and environment by defusing the spike. So we just covered the Mirrorverse to a pretty good degree. I hope you guys aren't lost at this point. If you're understanding me and following what's going on, type Jeppy is a good teacher in the comments and I might give you a little heart. So how does the spike work and why is Omega Earth's Valorant Legion using it to attack us? It's implied in the lore that Omega's Killjoy was the one who developed it, so you can thank her for that. But once the spike is activated, it senses all the Radiant within its radius, and once the detonation happens, it sucks in all the Radiant, essentially stealing it, and then teleports the Radiant to Omega Earth. That way, Omega Earth can use the Radiant they stole from us. They are doing this because Omega is running out of Radiant, and in a last-ditch effort to save themselves, they started attacking us to steal ours. Probably to buy them some time to think up of a way how to fix it themselves. I guess it wouldn't be that much of an issue though if it didn't cause devastating effects to the environment of Alpha Earth, and they're doing it without our consent. We see what happens if a spike is detonated in the Duelist cinematic. Somehow the Valorant Protocol got intel that a rogue Radiant was attempting to locate a significant amount of Radiant that was being stored in Venice, Italy, which will become the map Ascent later in Valorant. Phoenix was deployed to stop this rogue Radiant and not allow her to plant the device she has with her, which is the spike. Unfortunately, mostly due to Phoenix's overconfidence, the rogue Radiant, which turned out to be Legion's jet, but Phoenix did not know this at the time, managed to beat him. Luckily, he did use his ultimate before going in so he can revive himself afterwards, but what he saw would have stunned anyone who was looking at it. A massive chunk of Venice, Italy was floating in the air, exactly where the jet detonated the spike with the... अपना देखा देखा सा नहीं लग रहा? ये अपना क्या नाम है? एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एक्सेप्ट उसमें बड़े बड़े मोटर्स और पता नहीं क्या क्या लगे थे, हैवी मशीनरी। नहीं, बाहुबली नहीं, बाहुबली नहीं भाई। आई मीन हो सकता है, यू नेवर नो। ये तो क्या पता हनुमान जी ही हो, यू नेवर नो। वो बस दिख नहीं रहे हैं, हम इतने काबिल नहीं कि हम उनको देख सकें। तो डिस्ट्रक्शन तो नहीं करेंगे घर का, तो हनुमान जी तो नहीं होंगे। Never mind. Surrounding area. Now, this used to be called the Venice Incident of 2049. But remember how Riot retconned that because they didn't want to set an exact year of where Valorant's lore takes place. So now I think we just call it the Venice Incident. This was a shock to the entire world. Up until now, guys, the citizens thought that Radiant was safe and nothing really bad can happen because of it. The public also doesn't know about the Mirrorverse between Alpha and Omega. They have no idea there's another world out there with someone who looks exactly like them, and that a Radiant over there did this to Venice using an extremely advanced device to steal Radiant. They don't even know about the Valorant Protocol. Kingdom Corporation, remember Alpha's Kingdom because it's corporation and not industries, took the blame for this disaster instead.
they got slammed by all the media outlets and their stocks plummeted because everyone thought that Radiant was completely safe, and now they know it's not. What was told to the public is that this was a Radiant disaster that caused the Venice incident, and 2 Radiants were spotted on surveillance cameras at the scene. So the public was understandably very upset. The public even started questioning Radiants themselves as dangerous too, not just Radiant. अल्फा अच्छे रेडियो नाइट लेके आइए प्रभु। समझ रहा है तू, समझ रहा है। Night. So being a Radiant may start to feel like you're an outcast at this point. But one thing we need to talk about is, why did Phoenix not recognize the Jett from Omega's Legion when combating her? Because Jett was a member of the Valorant protocol at the time of this incident. Well, it's because the protocol was run very differently back then as opposed to now. Back then, Valorant's focus was on solo missions with only one agent being deployed to any incident they were called to correct. Most agents didn't really ever see each other, and all the classified important information was left for the higher-ups like Brimstone, Viper, and Sage. Phoenix had no idea about Omega Earth, just like the public, while the higher-ups at Valorant did. This is perfectly shown to us again in the Duality cinematic, which takes place the very next day after the Venice incident in Valorant's lore. Again, the Valorant protocol got intel of another Radiant attempting to plant the spike near a significant source of Radiantite, which happened to be a Kingdom Radiantite refinery in Rabat, Morocco, which we know of now as Bind. Also, again, the VP only sent one agent to the mission to stop this Radiant, and that agent was Killjoy. She quickly became overrun and requested some assistance because the Radiant planted another spike. Phoenix and Viper take a Vulture aircraft to the site and jump out to assist Killjoy, looking pretty cool while doing so, I might add. We'll start to see a trend, guys, of the VP moving away from solo missions now to at least a pair of agents, or even an entire strike team being deployed from here on out, as it's more successful. When Viper and Phoenix link up with KJ, she shows them that the device in front of them is attempting to harness all the Radiantite in the surrounding environment, which looks like to be a lot of Radiantite because of all the crates around. Killjoy shows them that she's working on creating something to stop the device from accomplishing its mission. Phoenix takes off against Viper's wishes to combat the Radiant running away. After he gets the best of him, he once again, for the second time in 24 hours, is met with the shock of his life. Phoenix, wait! Hands up, come on. You should see your face. Come on. Again, Phoenix did not know about the Mirrorverse and Omega Earth at this time. That's why he was so incredibly shocked. With time ticking down and their lives on the line, Killjoy quickly took the Radi Core from her sentry bot and used it to power the diffuser to stop the spike. Viper says the Radi Core needs to be superheated in order to adequately power this diffuser prototype Killjoy just made on the fly. Phoenix does his thing and bam, it was just enough to defuse the spike, stopping the detonation of the spike and the massive segment of the environment from being lifted up into the air, along with all of the Radiantite nearby and of course the agents' lives. Killjoy packed up the spike onto the Vulture for experimentation, while Phoenix questions Viper on why the enemy was, well, him. Viper tells Killjoy that Phoenix saw his Omega double, which maybe hints that Killjoy knows about the Mirrorverse and that it may be time to fill the rest of the agents in on what's really going on now. This is when the rest of the agents current at this time found out about Omega Earth and the Mirrorverse. Next up in Valorant's timeline is Yoru's search for his ancestors and things that belong to his bloodline. ये वाला बहुत क्रेजी होने वाला है योरू का, ये बहुत क्रेजी है, ध्यान से सुनना ही वाला। Yoru was searching kingdom facilities all over the world with reports of weird bright blue anomalies happening. कुछ मैप्स हवा में, कौन से हैं हवा में? असेंट है और तो कोई हवा में नहीं है।
असेंट हवा में है, जो वेनिस इटली वाला बताया ना, वही है वो, आई गेस। वही वेनिस वाली चीज हुई थी क्या? हाँ हाँ वही है, एसेंट के साथ। वो वेनिस वाला ही एरिया है वो। एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना रहने देते हैं, 21:30। ठीक है, अभी के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कल देखते हैं। थोड़ा नींद आ रही है मेरे को। ये पूरा देखेगा तू बता? पूरा देखूंगा तो फिर कल ऑफिस नहीं रहूंगा मैं। क्या ठीक? नहीं नहीं क्या, नहीं नहीं क्या ठीक हो जाए मेरे से वो? ओ मेरा शुभू, मेरा क्यूटी पाए। ओह शिट, नो 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 नो। ठीक है फिर, चलो जी, राम राम हमारी तुम्हारी। अच्छा लगा आप आए हमारे स्ट्रीम में। स्ट्रीम को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर कर दिया है लाइक तो एक 2 बार और लाइक पे दबा दीजिए, उससे 3 बार लाइक होता है। मजा आएगा, कर दीजिए। तब तक हमारी आपकी राम राम। मिलते हैं, मिलते हैं जल्दी। बाय। Just a normal day at work. Yeah. वन एंड ओनली काफी मुझे पसंद नहीं है टीम प्ले। लिया मैंने हाईवे हम आगे आगे स्ट्रीट से। शहर में जाने माने जब से हुए हैं हम 20 के। लिखता मैं क्योंकि चाहूँ कोई करे मेरा फील पेन। झूठ बोलना सीखा नहीं तभी हम बेटे जीत रहे। किलिंग इंस्ट्रूमेंटल्स बड़ा हुआ करके रीमिक्स। जब हुआ 18 का सता रही है नींद। ये अब सोऊंगा जब उतारूंगा बोझ अपना पीठ से। पूछा डेट के लिए वो कहती मैंने लीग में। बेबी गर्ल के नखरे ज्यादा कपड़े उसके शीन के। रहती वो मीन है जब तक मिले नहीं चीज केक। हम वो है बिच बैड टैटू उसकी जीन्स में। हाँ और ये सीखा 50 सेंट से। मुंह पे बात बोलनी सीखी गाने सुन के एमिनेम के। पंचेस बिग एल से कोल कैंड्रिक के फैन थे। इंस्पायर हुए हो वेन और ड्रेक के पेन से। मेज पे है प्लेट मेरी लौंडे ले रहे बूफे। 8 साल बाद तारीफे डीएम में करे स्कूलमेट। कई साल आगे तुमसे इफ यू रीडिंग दिस इज टू लेट। कोक दांतों में लगा रहे लड़के जैसे टूथपेस्ट। मिलके चले बॉयज यहाँ शौक गाड़ियां विद द लॉयज का। कुछ कमाने निकले कुछ पहले से इनर टोयोटा। रैप कर रहा दिल्ली और गुड़गांव से लेके नोएडा। बीफ की बातें करते हैं जो मीट खाते सोए का। जो फालतू कह रहा कहने दे। सीखा मैंने पहले से अगर तू नहीं भाई तो कैश लिस्ट नहीं देगी मेरी मैनेजमेंट। कमाई चोरी की तो उससे अच्छा भूखे रह लेंगे। सीखा मैंने घर से मेरे तभी चलती मेहनतें। सोच गहरी खाली नहीं ज्यादा टेंशन पाले नहीं। बल्ली मरान जाके प्लेट खाता मैं निहारी की। इन रैपरों का बन चुका पैटर्न है। लिखा नहीं जा रहा तो कंपेंसेट करे फैशन से। क्लाउड लेके लड़के हो गए हिट पहले साल में। फेम नहीं संभल रहा तो ये स्टाइल पे उधार के। वीडियोस में नाच रहे लाइफ पे है हाफ रे। स्टार बनना चाहते जिन्हें फंड करा बाप ने। बड़े हुए हम पेशेंट नहीं यार। लिखाई जैसे तब्बू तेरी रेटिंग से बाहर हो गए बड़े आदमी। कोई नहीं भाई बैठ चौकी जनता से नहीं मैच हो रहे स्पॉटिफाई स्टैट्स। किसी का खौफ नहीं था लेवल है गॉडजिला। जो सोचा बोल दिया किंग हूं मैं स्कॉर्पियन। गुस्सा ये ब्रोली का कीमत मेरे सोल की ना तब से कर रहा जब एबीजे काम थे पर सीधे मौत नहीं था। लायक हूं तो मैप पे मैं रैपिंग लाइक I'm God tier legend हूं तब से जब एक प्रोजेक्ट नहीं था ड्रॉप किया। स्मोक